Hello and very good morning, students of class 10th E. I hope you all are well. My dear students, we have discussed about various types of transmitted media. I already explained you what is guided media, what is unguided media. So do you have any problem at any point, dear students? I'm asking you, do you have any problem at any point, students? No, sir. No, sir. Okay. So I'll just also inform you that you start reading the notes, because the notes I have written is in very easy language. And I didn't use this bookish language. I used a very easy language so that you can easily understand that. And I try to make things as simple as I can. Okay. So please start reading the notes as well. Start learning the notes. And if you find any difficulty at any point, please inform. Okay. Now, I also want to know that do you have any problem at you can say that learning purposes? लर्निंग करने में प्रॉब्लम आ रही है बच्चों? No, sir. अंडरस्टैंड करने में कुछ समझने में दिक्कत आ रही है? ये बताइए, कोई ऐसा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा? अभी तक जितना मैंने पढ़ाया बस उसकी बात मैं कर रहा हूँ. The point through I just taught you have faced any issue? Dear students, do you have any problem, any doubt, any queries? No. Till the point I have told you. Yes, Mr. Beta, do you have any problem? No, sir. No, Confirm? sir. I don't have any problem. Okay. Yes, sir. So have you learned each and everything in a very clear manner, right? Yes, sir. We have started learning. Okay, my dear student. Now, okay, as you can see, you have prepared everything. So now I'm just going to start the today's topic. So you get the recording as well for this. Okay, my dear students, I told you about unguided media, right? And I told you that in unguided media, we don't use wired at all. Okay, we used in unguided media. In unguided media, we use electromagnetic waves instead of wires. No, sir. याद ही होगा, याद है? Student, remember this point? बताइए. Yes, sir. Okay. Now, I just want to know. I told you how many types of unguided media. Tell me. 3 types. 3 types. Very good. If you remember that. Yes, sir. Tell me the names. Yeah. Twisted pair cable, coaxial cable, I and tell you optical fiber. unguided media. Unguided media. Sir, radio Second- waves. Very good. A microwave. Microwaves. Waves. Satellite waves. Satellite microwave. Satellite microwave. Terrestrial microwave. Third is terrestrial. Microwave. So these are the 3 main types of unguided media. Actually, there are a few more as well, but mainly we have 3 types of unguided media, or you can say the wireless media. Through that we have to transmit data or transmit information. These are my radio waves, satellite waves, and terrestrial waves. Any doubt? Students, any doubt? No, sir. No, sir. My dear students, as you can see, I'll just give you the PDF. In this PDF, I just told you that this is very clear PDF, and you can see that there are 2 things.
वन इज ट्रांसमीटर, वन इज रिसीवर। एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है बच्चों, ठीक है। और दोनों में ही क्या लगा होता है? एंटीना लगा होता है। क्या लगा होता है? एंटीना। क्या लगा होता है? एंटीना। ट्रांसमीटर से डेटा ट्रांसमिट होता है। क्या होता है? ये देख रहे हैं वेव्स की फॉर्म में, ये वेव्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। देख रहे हैं बच्चों आप लोग? यस सर। ये एंटीना से रिसीव होता है ये सिग्नल सारे, और फिर ये रिसीवर तक पहुंच जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस क्या होता है? रेडियो वेव्स का। किसका प्रोसेस होता है? रेडियो वेव्स का। बहुत इजी है, आई थिंक। इजी है, डिफिकल्ट है? इजी। हाँ, अब देखते हैं होता क्या है ये। मैंने हालांकि कल बताया था आपको, बट नाउ आई जस्ट एक्सप्लेन इट with better examples, so that if you have any issue at any point, you just ask me. Okay, now what is radio waves? Radio waves are the electromagnetic waves that are transmitted in all the direction of free space. Students, radio waves are not a unidirectional. It will transmit it in all direction. That means I just want to show you that if you can see this figure, suppose this is a radio wave tower, okay, and this is the antenna. Suppose this is an antenna, okay. Suppose it's not look like the antenna, but it transmits a signal in all direction, okay. It transmits a signal in all direction. That means here is also transmit a signal. It also transmits signal here. It transmits signal here also, okay. My dear student, रेडियो वेव्स के सिग्नल चारों डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में फैलते हैं, ओके। ये ओमनी डायरेक्शनल है। क्या ओमनी डायरेक्शनल माने सभी डायरेक्शन में इसका सिग्नल ट्रांसमिट होता है, किसी एक सिंगल डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट नहीं होता है। डू यू गेट दिस पॉइंट? यस सर। इसके अलावा देखिए क्या, रेडियो वेव्स आर ओमनी डायरेक्शनल। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब होता है ऑल डायरेक्शनल। द सिग्नल्स आर प्रोपोगेटेड इन ऑल डायरेक्शन। प्रोपोगेट माने बढ़ते हैं आगे। तो द डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड इन एनी सिंगल डायरेक्शन, it is transmitted in all direction, okay. So that's why it is called omnidirectional. Third is the range in frequency of radio waves is around 3 kilohertz 1 kilohertz. बेटा इसकी होती है एक 3 किलोहर्ट्ज से 1 किलोहर्ट्ज तक होती है, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा 93.7 हर्ट्ज होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, ओके। तो ये जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1 किलोहर्ट्ज से 3 किलोहर्ट्ज तक के बीच में होती है। कोई डाउट यहाँ तक? फ्रीक्वेंसी रेंज बच्चों? नो सर। एनी डाउट? in the No, sir. case of radio waves, the sending and the receiving antenna are not aligned. They the waves sent by the sending antenna and get received by the receiving antenna. Dear student, मैंने आपको बताया कि दो अलग अलग एंटीना होते हैं, जैसा कि फिगर में बना था। सेंडिंग एंटीना अलग होता है, रिसीविंग एंटीना अलग होता है। देख रहे हैं, ये एंटीना सेंडिंग एंटीना है और ये रिसीविंग एंटीना है, ठीक है। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में रखे होते हैं या थोड़ी डिस्टेंस में रखे होते हैं। समझ नहीं बात? अगर मैं अपने कानपुर की बात करूं तो आप लोगों ने एफएम टावर सुना होगा ना, बेना झावर के पास, राइट? ये बजाओ रे अपना। सुना है आप लोगों ने बेना झावर के पास? ट्रांसमिटिंग एंटीना है। तो आप लोगों के मोबाइल पे, गाड़ियों पे या जो भी कहीं पे भी कह सकते हो, एफएम जो आपको सुनाई देता है वो किसका एग्जांपल है? वो एग्जांपल है आपके रिसीविंग एंटीना का। समझ नहीं बात बच्चों? बताइए। कौन है? कौन था ये बच्चों? क्यों? कोई एक लड़का पुष्पा राज का के वही है। अच्छा, सब लोग म्यूट कर लीजिए अपना। ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ। बच्चे समझ में आ रहा है इतना ये बताइए आप लोग। स्टूडेंट्स, I hope you get the, I mean, you have easily understand each and every concept. Now, in the case of radio waves, the sending and receiving antenna, I just told you already thing. The example of radio waves is FM radio. FM radio आप लोगों ने सुना है? तो जिसका example है radio waves का FM radio. You can see there is no wire involved in the FM radio. You can directly access the radio by the radio antenna. This is, you have the receiver antenna. And this and the sender antenna send the radio waves, or you can say electromagnetic waves, okay.
I hope you get this point only. Okay, now the advantages of radio waves. We need to understand what are the advantages of radio waves. Advantages क्या radio waves के? Radio waves have mobility. My dear students, you can know that when you are driving the car, or you can move one place to another, when you are listening the radio or FM, you don't get any problem, because radio waves have facility to mobility. इनमें mobility की खासियत होती है, यानी ये waves अपने साथ easily कहीं पे भी travel कर सकती हैं, ठीक है। इनमें आपको जरूरी नहीं कि आपको एक जगह स्टैंड लेना पड़ेगा, खड़े लेना पड़ेगा। यू कैन इजिली मोबिलेट, और यू कैन कहीं पे भी जा सकते हैं आप, मोबाइल कर सकते हैं, मोबिलेट कर सकते हैं आप, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिस इज द वन एडवांटेज ऑफ द रेडियो वेव। क्या बोलते हैं? रेडियो वेव हैव मोबिलिटी, रेडियो वेव हैव फैसिलिटी ऑफ मोबिलिटी। डियर स्टूडेंट, एनी डाउट? ओके, No, sir. second is the low maintenance cost, as no need for physical wire. You can need my dear students, in radio transmission or radio wave, there is no need for wire. You know, this is very simple. Reason is very simple. Just because of that, there is no cost of wiring or anything like that. So there is no such things required. So that's why the maintenance cost of radio waves are too low. मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होती है बच्चों, समझ गई बात? बताइए, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ रेडियो वेव्स आर वेरी लो बिकॉज देयर इज नो फिजिकल वायर इज रिक्वायर्ड। तार टूटने का कोई खतरा नहीं है। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। थर्ड इज इजी टू कम्युनिकेट एट रिमोट एंड हिली एरियाज। माय डियर स्टूडेंट्स, जहां पर तारों से डेटा ट्रांसमिट नहीं किया जाता है, आपको पता है प्रॉब्लम आती है, वहां पे एंटीना लगा दिए जाते हैं सेंडर के और रिसीवर के भी। आप देख सकते हैं इजीली डेटा ट्रांसमिट हो जाता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ easy communication in hilly and remote areas. Remote areas where it is very difficult to wire the physical wires. Okay, so that is why radio waves are very popular. So I hope you get this point. Now, the one of the disadvantages of the radio waves, it is insecure communication. What do you mean by insecure communication? That means that your while you are using the network, at any point of time, your network will be abandoned. कब किसी भी समय नेटवर्क में प्रॉब्लम आ सकती है। ये सिक्योर नहीं है, कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है। रेडियो सुनते सुनते कभी भी एफएम में प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, इट इज नॉट 100% सिक्योर। दैट्स व्हाई any hamper in the network arise due to any condition. Second is radio waves can be affected by the poor weather condition like rain, etc. You know that radio wave can be affected. You know, you have to face this kind of challenges, that sometimes your disc will not come, or your FM is not properly working, your radio is not properly working just because of poor weather condition, too much rain, too much wind, and all these conditions can cause the hamper of the network. So this is an example of disadvantages of radio wave. These are not 100% accurate. Okay, have you got the point? I just already explained this. You can say that this figure. Now, my dear students, we are going to discuss about terrestrial microwaves. So, dear students, as you can see in the figure, you know this is our Earth. So you can see that there are various antennas are available. Various antennas are available. So you can see that this is a sender antenna, is a receiver antenna. So in the Earth, two antennas are placed at different direction, some distance. Suppose this is 50 kilometer or 70 kilometer away from each other. 70 या 80 किलोमीटर एक दूसरे से दूरी पे लगे हुए एंटीनाज हैं। तो 70 और 80 किलोमीटर के बीच में जितना भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो इन्हीं दोनों के बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है क्या? टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव। थोड़ा देखते हैं क्या होता है ये। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। Terrestrial microwave transmission is a technology that transmits the focused beam of radio signals from ground wave microwave transmission antenna to another. बच्चों, इसमें ट्रांसमिशन एंटीना से ग्राउंड बेस्ड ट्रांसमिशन एंटीना से एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा ट्रांसमिट किया जाता है। यही बात इसमें लिखी हुई है आपके नोट्स में भी, जैसा कि फिगर में आपने देखा कि जो द टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव transmission is a technology that transmits focused beam of radio signals
बेटा इसमें रेडियो सिग्नल्स की बीम जाती है ग्राउंड वेव माइक्रोवेव ट्रांसमिटर एंटीना से, एक एंटीना से दूसरे एंटीना के बीच में इसमें वेव्स ट्रांसमिट होती है। Microwaves have electromagnetic waves having frequency of range 1 gigahertz to 1000 gigahertz. Beta, the frequency range is from 1 gigahertz to 1000 gigahertz. Can you understand this point? The frequency range is around 1 gigahertz to 1000 gigahertz. That means your frequency of this terrestrial microwave is lie in this range, 1000 gigahertz to 1 gigahertz to 1000 gigahertz. I hope you get this point. Now, third point is microwaves are unidirectional. Our sending and receiving antenna is to be aligned in the wave by the sending antenna are narrow focused. Okay, as you can see that beta, this is a unidirectional. Data is not bidirectional transmitted or omnidirectional transmitted. Data can be transmitted only in single direction. We don't have too many directions or bidirectional. Data सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो सकता है. Okay. Now the fourth point is, in the case of antenna are mounted on the tower to be send a beam of antenna, another antenna which is kilometer away. मान लीजिए कोई एंटीना अगर किसी पहाड़ी पे लगा हुआ है तो दूसरा एंटीना जो होता है वो उसको सिग्नल पहुंचाता है जो थोड़ी दूरी पे लगा, कुछ किलोमीटर की दूरी पे लगा होगा. ओके, यानी कि दो एंटीना के बीच की डिस्टेंस थोड़ी बहुत होगी. ओके, हिली एरियाज में भी अगर कोई एक एंटीना एक किसी हिली एरिया पे लगा हुआ है तो थोड़ी दूरी पे या कहीं पे भी लगा हुआ है तो थोड़ी दूरी पे दूसरा एंटीना लगा होगा. जैसा कि फिगर देख सकते हैं, मान लीजिए ये एक एंटीना प्लेस है. यू कैन सी दैट दिस एंटीना इज प्लेस फॉर सेंडिंग द डेटा. दिस इज अनदर एंटीना विच रिसीविंग द डेटा. आई होप यू गेट द पॉइंट. एनी डाउट? नो सर. इजी है. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फ्रीक्वेंसी रेंज. The frequency range of terrestrial microwave is 6 gigahertz to 21 to 23 gigahertz. ये इसकी frequency होती है. It supports the bandwidth from 1 to 10 Mbps. बेटा एक 1 Mbps से 10 Mbps की स्पीड होती है डेटा ट्रांसमिशन की. 1 Mbps से 10 Mbps मेगा बिट्स पर सेकेंड इस स्पीड में डेटा ट्रांसमिट होता है. शॉर्ट डिस्टेंस इट इज इनएक्सपेंसिव फॉर शॉर्ट डिस्टेंस. बेटा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए डेटा ट्रांसमिट में यूज नहीं होता. थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर इस तरीके की रेंज में करीब डेटा ट्रांसमिट करने में इसका यूज होता है. लॉन्ग डिस्टेंस इट इज एक्सपेंसिव एज इट रिक्वायर्ड हाई टावर फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस. इसको लॉन्ग डिस्टेंस में इसको लगाने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है. ओके, और अगर एटीन्यूएशन की बात करें तो एटीन्यूएशन मींस लॉस ऑफ सिग्नल्स. इट इज अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट कंडीशन एंड एंटीना साइज. एटीन्यूएशन मतलब क्या होता है? सिग्नल लॉस होने की प्रॉब्लम. बेटा इसमें सिग्नल लॉस हो सकते हैं अगर वेदर कंडीशन खराब हो. इफ द वेदर कंडीशन इज पुअर देन देयर माइट बी अ चांस दैट योर सिग्नल विल बी हैम्पर्ड. ओके, सो आई होप यू गेट दिस पॉइंट. So these are the characteristics of terrestrial microwave. Now the advantage of terrestrial microwave. Microwave transmission is cheaper than using cable. ये केबल से तो सस्ता ही होता है. याद रखिएगा, it is free from land acquisition. It does not require any land for installing the cable. बेटा इसमें तारों के इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती. जमीनों का अधिग्रहण या जमीनों को लेना नहीं पड़ता है ताकि आपको तार बिछाने पड़े. तो it is free from land acquisition. You can easily install without land acquisition. बिना लैंड को एक्वायर करे आप लोग इन टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव को इंस्टॉल कर सकते हैं. ओके, और द नेक्स्ट पॉइंट इज डिसएडवांटेजेस. क्या इनके नुकसान है? इनसिक्योर कम्युनिकेशन एज ट्रैकिंग इट इजीली. बेटा ये बड़ा इनसिक्योर टाइप की डेटा कम्युनिकेशन होती है. इसमें कभी भी आपके सिग्नल्स को कोई भी इजीली कह सकते हैं हम कनेक्ट कर सकता है. कोई भी हैक कर सकता है आपके ट्रांसमीटर को, आपके सिग्नल्स को. यानी आप जो भी बात कर रहे होंगे इजीली हैक हो सकती है. इसके अलावा पुअर वेदर कंडीशन कैन आल्सो कॉज प्रॉब्लम इन ट्रांसमिशन. मौसम अगर खराब होगा तो भी डेटा ट्रांसमिट करने में प्रॉब्लम आएगी. तो माय डियर स्टूडेंट, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव और एंड रेडियो वेव्स? बताइए. नो सर. प्रॉब्लम? No, sir. हाँ. Now the last is satellite waves. My dear student, tomorrow I will explain this thing, and tomorrow I will take your doubt class. Tomorrow I will take the big revision as well as I will explain this satellite microwaves. So before that you have to complete all the work in your computer notebook and submit the work
from before means you have to come to school at 13th of April and submit all your work. So before that, I'll just say goodbye. And if you have any problem, you will make a note for that, make a list and tell the queries. Tomorrow, I will also sort out your queries. Tomorrow, I will firstly explain this satellite microscope. And after that, I will clear all your queries in any topic. From the beginning, I have started. So you have to prepare it very well. Okay. Any problem. Okay. Have you got my point? Yes, sir. Okay, students. So now, have a nice day. Bye. Bye.